লকডাউনের মাঝে অর্থনৈতিক মন্দা, চাকরির বাজারে ধস, ব্যবসায় ক্ষতি এগুলোই হয়ে গিয়েছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। বিমান পরিষেবা ক্ষেত্রের চাকরির বাজারেও নেমেছিল ধস। সেই অসময়েও তরুণ উদ্যোগপতি সিনহা গোষ্ঠীর বিপ্লব কুমার সিনহার হাত ধরে শুরু হয়েছিল 3 স্টেপস, একটি অ্যাভিয়েশন ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটের বয়স মাত্র 7 মাস হলেও সাফল্য বয়সের তুলনায় অনেকটাই বেশি। মাত্র 25 জন কর্মীকে নিয়ে শুরু করে তাদের কর্মী সংখ্যা আজকের দিনে 100 জনেরও বেশি। রবিবার সল্টলেকে অনুষ্ঠিত হল 3 স্টেপস অ্যাভিয়েশনের 7ম বিজনেস মিট। ডিসেম্বরের নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী টার্গেটের তুলনায় অনেকটাই লাভের মুখ দেখেছে 3 স্টেপস অ্যাভিয়েশন। এদিন উপস্থিত ছিলেন 3 স্টেপসের কর্ণধার সহ 5টি ব্রাঞ্চের কর্মীরাও। 3 steps. Everybody is aware over here that it is a lockdown product. We have started this brand in the lockdown period when the companies were going off, people were losing their job. That time our respected chairman sir thought of starting an organization and giving jobs and imparting education to people. That is a very good cause which he did. The time people were demotivated, ki there is nothing in the market, any market, be it banking, aviation or anything. That time he took that courage, and that plan he made with Arunavada that he is going to open an institute in which he will be giving training and academic institute and then providing with the placements. Previously, 3 attempts were made by our beloved chairman sir to open an academic institution which will only thrive based on education that we give. But it never happened. But this time, in the month of May, while the lockdown was on, in April we had a nice stint. We prepared a film just based on mobile phones. We shot each other, he made the script, and it was a huge success. The people who are working here, with all due respect to Mr. Rakesh, he's maintained it so well that everybody is really very positive. Everything is happening in a very organized manner with cooperation, coordination, and I'm looking forward to work with the team and give my best as well. Thank you so much. Good morning to all of you. And to all the managers, faculty, and CEO, especially Mr. Rakesh, Business HOD Sina, Saurabh Dhuti, and the HR Riti also, and Snehasi Sumit, and all the other managers. Take my best regards to this. Actually, my voice has been choked up. Basically, 3 steps, that means, 3 steps means the class. One is class, second one is the efficiency, and third one is the services. So I have given a name of 3 steps. The steps, the word steps, that is success is always on top, efficiency of the permanent services. That is steps, the full word. So this is the actual class of 3 steps. And 3 more things I am bringing up this month. That is a world-class infrastructure branch. That is in BIPL. And second thing is that and the 2 branches are coming up, right? And third one is the facilities for the students, that easy loan for your students. Then we getting the easy loan. This is also a 3 class, 3 categorical, benefits we are bringing for the 3 steps. That is what exactly. And frankly speaking, the 3 steps and its employee and its operations and SOP, the standard operational process, has become now ideal for everyone, for any other sector. Even the big tycoons, the big daddies who are there in the aviation industry for a long time, they are also feeling jealous of us. You guys are really doing very good, and I'm just not only impressed, I'm seeing the future that the 3 steps will dominate in India, nearby future in Pan-India basis. And I definitely give the full credit to Mr. Rakesh Upadhyay and Sina that you guys are really doing well, and your main, the characteristic potential is that
that you are bringing the peoples who are really the gem. No, like Lina, Shalini, they have come and joined, and you have chosen them the best people because they are having the best quality in the market. They are having the best product skill, quality, experience, whatever. You guys are rock, and I think that your service towards the prospect of the company is going to be so far high and well decorative. I must expect. Thank you, Salini and Lina, for joining us. And definitely, I must say, Mr. Snehasis and Ms. Mashant, that today I am not going to extend my speech because I told you that my voice has been totally choked up. बहुत क्रिकेट खेलते हैं हम लोग आफ्टर द इवनिंग, सो उसी का असर है. तो यही बोलूँगा स्नेहासिस एंड सुमित माशांत, you guys are your continuous contributions towards the prospect of this company. It is really appreciated, and the way you guys have started up with the less salary, and I must say that after 1 year down the lines, you will be, having both. You are going to change your car. And facilities, if I comply, if I do comply, that is, I do have another brand of Takeoff and Talento and others also, or in News or in Media Bangla, many verticals I am having. But I try to give the best facilities and the benefits 2-3 steps fast. It is my the first priority to give you the best services. Again, I am telling you that maybe you are facing a lot of there is pandemic situations, aviation was go down, and many people thought that many people in past they started losing their jobs also. But that times, because I always learned that 2O is big factor for your life and career. That is opportunity and the obstacles. If you get the obstacles, there must be some opportunity. So when people started seeing that there everywhere the obstacles, and that times I started choosing opportunity. Because आप सोचो कि जब लोग और एम्प्लॉय जॉब खो रहा है और उसी टाइम अगर बेस्ट एम्प्लॉय किसी कंपनी को छोड़ के जा रहा है और उसी टाइम अगर बेस्ट एम्प्लॉय को आप ले लोगे तो उसी बेस से आप खुद बेस्ट कंपनी और बेस्ट एक एम्पायर बना सकते हो. दैट इज व्हाट आई एग्जैक्टली डिड and it clicked, and thanks to God, thanks to Almighty, I'm really blessed up that I'm having the employee like you. It's not only my charisma and my things, maybe my vision and my missions were there, but without your contributions, it was not being done. Thank you so much. This is a wonderful opportunity just to come over here and to say about this. And first of all, I would like to say thank you so much, Evan said, just to give me this kind of opportunity to implement a good product, good new thing, which will really help all brands, especially 3 steps. You see, you'll be finding there are candidates who are coming to you, and they are very much interested to continue with the good course in aviation industry, but they don't have that kind of financial support. So this support we are giving the students, or from now onwards we can start giving the students this kind of financial facility, because 3 steps is tied up with NEEF Finance, who are giving the educational loan to the candidates, irrespective of their background, irrespective of their financial status. If they have a minimum criteria, then the students can get the loan or the educational loan, and they can repay or the payback the amount in a long span of time, minimum 12 months to 18 months time. And this loan approval, as you know, that just to get a loan approval, minimum 5 to 7 days time is required, right? Lot of documentation had to be taken place, lot of work to be done, but these loan can be approved in just 2 hours time, which is a big facility. So if you have the documents, all the documents, and when you send it to
then the loan can be approved. Obviously, there will be a guarantor part that all will be explained to you very nicely, and you can get all the student list who are unable to pay but they have a dream to join in Three Steps Academy. So definitely, it's a big opportunity for all of you. And this opportunity we have got because Honorable Chairman Sir has given this permission to implement it for Three Steps Academy. Now I would like to request sir, if you please come over here, I will hand over the MOU to you. Thank you so much, Mr. T. Chatterjee, that you have fought towards the bringing the loan facility for my students. It is really commendable. एखाने इटा जो होगा आप कैंडिडेट जो कैंडिडेट को मतलब काट जाता है पैसा नहीं दे पा रहे तो उसको आप ये ऑफर कर सकते हो पहले पूरा सबका ऑफर मत कीजिएगा ठीक है then everyone will get interested. तो ये लोन बहुत इजीली पास हो जाएगा 24 आवर्स एक दिन का ये टाइम लेता है 2 आवर्स में इसको सैंक्शन हो जाता है ठीक है तो इट्स वेरी गुड वट एवर द अमाउंट्स यू हैविंग आप अगर देख लो कि कैंडिडेट बोलो इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा तब उसको ऑफर करिएगा ठीक है अगर दे पाएगा तो भाई इजीली ले लेगा तो आप उससे वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई किसी का इनकम फार्मर है कोई गांव का है जिसका कोई इनकम प्रूफ नहीं है मे भी उसका पेरेंट्स का या किसी का इनकम प्रूफ नहीं है तो उस टाइम में आप उसका लोकल एमएलए कितना इजी देखो लोकल म्यूनिसिपैलिटी और लोकल एमपी या लोकल कोई गैजेटेड ऑफिसर होगा अगर लिख देगा कि इसका इनकम इतना है आप इसको लोन अप्लाई कर सकते हो तो वो भी पेपर्स एप्रिशिएट हो जाएगा कितना इजी है तो इजी लोन्स इसलिए इसका नाम दिया गया है और कोई एक साथ अगर किसी का पापा इनकम बहुत ही लेस है ईएमआई जितना 2,500-3,000 है उससे भी लेस है तो 3-4 उसका जो ब्लड रिलेशन है 3-4 व्यक्ति एक साथ उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं मामा पापा का इनकम मामा का इनकम चाचा काका का इनकम ठीक है ब्लड रिलेशन में तो ये वही साथ अप्लाई करके इसको अप्लाई कर सकते हो ठीक है इमीडिएटली मतलब आप जो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हो ना वो इमीडिएटली पूरा अमाउंट आपके कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा ठीक है द बेस्ट है कि नहीं Tenure, they can pay the loan amount tenure in 1-2 years, 3 years or something while they get a job. 12 months up to 18 months. 12 to 18 months अगर कोई 50,000 ले लेगा तो आपका जीरो इंटरेस्ट भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ये भी सुन लो इंटरेस्ट whatever that is going to be paid by the company अगर 1 लाख का उसको लोन मिल रहा है तो I will be getting 90,000 my company Three Steps Academy will be getting 90,000 and the students doesn't need to pay any interest ठीक और इस 90,000 को वो 18 मंथ में पे कर सकते मतलब 5,000 का उसका पर मंथ आएगा तो जॉब दिला दो अब 10-15,000 का और भी एक फैसिलिटीज है अगर कोई कैंडिडेट को पहले एडमिशन करा के आप उसको ऑफर लेटर दिलवा सकते हो उससे अच्छा वाला कोई ये वो भी हम सिखा के रखेंगे इंटरनेट टैलेंट को ऑफर लेटर दे देंगे लोन हो जाएगा उसका ट्राई भी कर लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक सामान अगर कोई मतलब लोन नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स को अगर कोई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ जोक से बात कि कोई कंपनी में राकेश तुम अगर जॉब दिलवा दोगे सपोज आप जो जहाँ पे कराते हो आईजीटी जो भी है कराते हो जो लोग या स्पाइस इंडिया जो भी कराते हो तो वहाँ पे अगर 20-15 हज़ार का लोन उसका ये हो जाएगा सैलरी आ जाएगा तो वो एडमिशन के साथ अटैच करके वो खुद अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम कोई मतलब गार्जियंस का कोई इनकम प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ेगा ये भी कर सकते हो तो मैंने सोच लिया कि हम लोग तो बहुत सारा कंपनी है तो इधर उधर ऑफर लेटर दे देंगे हम एचआर डिपार्टमेंट से उसका लोन पास करवा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है और एक भी चीज हो सकता है कि कोई भी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ फिजिकल मतलब उसका घर में जाके कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ हमारा एडमिशन मतलब जो एडमिशन फॉर्म होता है दैट इज रिक्वायर द एविडेंस ऑफ एडमिशन ओनली रिक्वायर द जो आपका एडमिशन लिया है उसका एविडेंस चाहिए कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इजी लोन ये हमारा कंपनी का वेबसाइट में वहां पे लिखा है यू आर फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच यू आर फेसिंग इफ यू इंटरेस्टेड बट
यू डोंट हैव दैट मच ऑफ साउंड फिनेस बैकग्राउंड, अप्लाई इजी लो, वहाँ पे अप्लाई करेगा, आपका कंपनी का जो आप लोग जो मेल हैंडल करते हो, कंपनी का जो डोमेन मेल आईडी, वहाँ से उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। ঠিক আছে, তো বেস্ট অফ লাক। এই ইনস্টিটিউটে আসা ছেলে মেয়েদের শুধু ট্রেনিং নয়, চাকরিও নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর 3 স্টেপস অ্যাভিয়েশন। ক্যামেরায় অরূপ পালের সঙ্গে পিঙ্কি অধিকারী, আরোহী নিউজ, কলকাতা।